धान और गेहूं में मेरा लागत ज़्यादा था और आमदनी कम था। नए नए खेती के बारे में हमें जानकारी नहीं मिल पाती थी। सही समय पर और सही बीज हम लोग को नहीं मिल पाती थी। Long cropping cycles, minimal returns on investments. A small and marginal farmer finds himself engulfed in this agricultural crisis. But joining hands with these farmers is this duo. IIT graduates Shashank Kumar and Manish Kumar, who turned to the fields of Bihar rather than air-conditioned offices of multinational companies. दादाजी हमारे किसान थे, खेती करते थे। गांव में हम लोग का आना जाना हमेशा से रहा है। किसान वर्ड सुनते ही लगता है कि यार कोई एकदम ही मजबूर इंसान जो कि बहुत गलत से लग रहा है कि वो गलती से खेती कर रहा है। और जब हमारे यंग जनरेशन के लोग खेती में नहीं आ रहे हैं तो ये एक बहुत ही बड़ा ट्रेजेडी होने वाला है अगले 10, 15, 20 साल में। एक बहुत बड़ा क्राइसिस होगा। तो ये एक सही टाइम है जब हम लोग इस सेक्टर में आएँ और यूथ को मोटिवेट करें। Determined to give a new lease of life to these isolated farmers, Shashank and Manish made it their mission to resolve their innumerable issues, and so began their journey in October 2010. We started our journey from 13 farmers of 3 neighboring villages. We used to think that marketing of the farm produce is the only problem or probably the biggest problem for farmers because they are not getting right price. So very simple thought when we got that why not just to take the produce from small farmers, consolidate and take it to the bigger market. But when we started our work, then we realized, we learned that that's not something which is their bigger problem. Their actual problem begins in the beginning of season itself, that which crop they are growing, right, which variety they are taking and how they are moving ahead in season, right. And then we thought that no, we must intervene at these steps. The duo devised a business model through which farmers receive seeds for cultivation. They are trained to cultivate seasonal crops suitable to the soil condition of their farms. And lastly, they get a cash return for their farm produce right at their doorsteps. We have derived a business model around farmers and those institutional buyers. So at one side, to farmers, we provide end-to-end services right from crop selection to marketing, and on the other side, to buyers, we provide them quality produce at competitive price with full scope of customization and traceability. These techies decided to create local entrepreneurs who would reach out to farmers in their locality. And so came the idea of establishing Dehat centers. Adept with services ranging from seed distribution to procurement of farm produce, there are now 10 Dehat centers operational in different districts of Bihar. देहात के जो हमारे कोऑर्डिनेटर होते हैं, जो देहात चलाते हैं, वो वहाँ के लोकल स्थानीय होते हैं, ताकि उनको हर कुछ पता होता है कि कैसे यहाँ के लोगों की सोच है, क्या यहाँ का एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, एक्चुअली यहाँ के किसान को क्या चाहिए। Shashank and Manish founded Farms and Farmers in February 2011 and enrolled more than 50 scientists to train farmers about soil testing and methods of cultivating different varieties of crops. मेनली ट्रेनिंग 2 तरह की होती है। एक ट्रेनिंग में वैसी बातें बताना जो किसान को पता नहीं है, और दूसरी वो जो किसानों की समस्याएं उनको दूर करना। उदाहरण के लिए मिट्टी जांच करवाना चाहिए, किसानों को पता है मिट्टी जांच करवाना चाहिए, लेकिन क्यों करवाना चाहिए फ़ायदा नहीं पता है। नए फसल की जो जानकारी है, कुछ नए फसल करना है, राजमा करना है, इससे क्या फ़ायदा होगा। Like most farmers across the country, Arun Kumar only cultivated traditional crops, and with meager returns at the end of the season, it became difficult for him to sustain a living. But after the intervention of Farms and Farmers, he started growing seasonal crops such as kidney beans, and the experiment turned out to be a very profitable one. साल में हम लोग 2 ही फसल उगा पाते थे, धान और गेहूँ, और उससे किसानों को जितना लागत होता था उससे कम ही आता था हमारे की प्रोडक्शन उसका। तो इसलिए मनीष बाबू से जुड़ने के बाद वो मैंने सब्जी की खेती, राजमा की खेती, इसमें अच्छा खासा मतलब हम लोग बेनिफिट आ रहा है। और सुविधा क्या है कि इनका बीज वगैरह भी हम लोग के घर पर ही मुहैया होता है, और बेचने के लिए सोचना नहीं पड़ता है कि हम लोग कहाँ इसको बेचे, मार्केटिंग करेंगे। Now a team of 8 farms and farmers operate from their head office in Patna.
where a group of graduates from premier engineering colleges are challenging old notions and reaching new thresholds, working with the sole aim of uplifting small and marginal farmers. लगभग 5 साल के अंदर कम से कम 1 लाख किसान हमारे होंगे और 1 लाख किसान होना बड़ी बात नहीं है। हम लोग हमेशा बात करते हैं कि 1 लाख हमारे हैप्पी एंड सेटिस्फाइड फार्मर्स होंगे जो FNF के ब्रांड एम्बेसडर्स कहे जाएंगे। The beginning of a revolution in agriculture, a boon for thousands of farmers in Bihar. Manish and Shashank are our grassroots soldiers determined to change the face of farming in India. We see a kind of happiness, we see a kind of hope in their eyes. It's been 3 years, hardly we are breaking even, right? But still, you know, we are so motivated, we are so passionate, and the entire team is so, you know, determined to continue their whole life in agriculture.